I know what are you guys thinking. What in the world is this? Training your bicep without weight is like not training at all. It's not like your ab workout or leg workout जो आप कहीं पे बिना किसी weight के भी कर सकते हो. But for the bicep, it's not that simple. In order to train your bicep, you need to create tension, and for that you need some weight. और यहीं पे आती है जुगाड़ टेक्नोलॉजी. And guys, one more thing, अगर आपको मेरा काम जरा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए. यहाँ पे हम बाइसेप कर्ल को ट्रेन करने के लिए ईंट का यूज़ कर रहे हैं, ब्रिक्स. अगर आप पहली बार बाइसेप कर रहे हो या फिर आप बेसिक लेवल पे हो, देन दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. Now if you feel like this is not enough weight, then you can raise the weight. Simply put the bricks into the bucket and you are good to go. For this one, keep your hands like this, like you are pushing something up, upward like this, not like this, like this. This is the best exercise for your bicep peak. Now you can see the pump. I'm not in the shape, not even close, but the pump I'm getting here is of next level. So if you ask me to choose best exercise for your bicep peak, I always go with this one. I know what are you guys thinking. What in the world is this? If you want to make your forearm real strong, जैसा कि पहलवान लोगों का होता है, जो एक बार पकड़ लेना तो हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, वैसी पावर आती है इस एक्सरसाइज से. Guys, this exercise might not let you look great, but this will make you real strong. अब इसको करने के लिए आप एक पेपर ले लो, उसको मसलना शुरू करो जब तक कि वो पाउडर ना हो जाए. आप देखोगे ना, थोड़ी देर बाद आपके हाथ भरने शुरू हो जाएंगे और फर्दर करना काफ़ी हार्ड हो जाएगा. और इस एक्सरसाइज के पीछे का जो साइंस है, In our body, there are two types of skeletal muscle fiber. Number one, slow twitch, and number two, fast twitch, which further divide into two subcategories, type 2A and type 2B. Now, our slow twitch fiber enable us to do something for a very long time, and it does not let us fatigue very soon. Now, here you can see in marathon, around 80% of slow twitch fiber are enabled, and in case of sprinters, only 20%.